हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू माय चैनल। आज आम पढ़ा एक्सेलरेशन। आज हूँ लेक्चर नंबर 4। मुझे तुमको पढ़ेबी व्हाट इज एक्सेलरेशन, व्हाट इज एवरेज एक्सेलरेशन, व्हाट इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, व्हाट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ताको बेस कर बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करबा। आ पूर्व मु तीनटा लेक्चर देछि, ताको तुम चाहिले भी देखि परिबो सो दैट तुमको बुझिया पे इजी हो। अदरवाइज किछि वरीड हेबार नै, मु आराम से बुझाइ देबी। सो आई थिंक यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर. Without further delay, we will start the lecture. My name is SRP. You are watching my beautiful channel 7 Minute Science. So let's start. Acceleration कौन actual देखो. Acceleration is the rate of change in velocity. The rate of change in velocity. माने वेलोसिटी की को रेट रे तुम चेंज करछो, माने वेलोसिटी जम तुम जो गाड़ी चलोछो एक्सीलरेटर मोड़छो, एक्सीलरेटर मोड़ले कोन होछ, तुम वेलोसिटी बढ़ुछि, तामने चेंज होच वेलोसिटी। द वेलोसिटी चेंज हबो विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, ताको हमें कोन कहबा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी व्हिच इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज रिप्रेजेंटेड एज a, it is a vector quantity, it is a vector quantity. our acceleration dimension होच m0 l1 t to the power -2. ओके, ଗୋଟେ छोटी एग्जांपल देबा। लेट मु कहबी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन मीनिंग देखो। आर मीनिंग होची 2 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी चेंज होची गोटे सेकेंड रे। आर होची मीनिंग गोटे एग्जांपल दोस देखो। लेट एटा t, एटा होची v। जते टाइम 0 थला वेलोसिटी 0 अछि, जते टाइम 1 अछि वेलोसिटी 2 हे गला, टाइम जते 2 अछि वेलोसिटी 4 होची, टाइम जते 3 अछि वेलोसिटी 6 होची, टाइम जते 4 अछि वेलोसिटी कते 8 होची। देखो एटी वेलोसिटी केते बढ़छि, 2 बढ़ला, तापर केते पुनी अगेन 2 बढ़ला, एटी 2 बढ़ुछि, पुनी एटी 2 बढ़तन वेलोसिटीटा इंक्रीज होउछि विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तन टाइम तो बढ़ी बढ़ी जाउछि, ता सहित वेलोसिटी भी बढ़ी बढ़ी जाउछि। ए वेलोसिटी देखो इक्वली बढ़ुछि, सेतबे आगु को अछि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ओके, आमे तापर पार्ट को जेबा। एबे जदि मु तुमको कहिबी एक्सेलरेशन केतरा टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, तो फास्ट तो कहबी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तापर कहबी वेरिएबल एक्सेलरेशन, वेरिएबल एक्सेलरेशन। तापर कहबी एवरेज एक्सेलरेशन। आ गोटे लास्ट गोटे इंपोर्टेंट अछि, सेटा कहउछ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो चारटा टाइप रो एक्सेलरेशन अछि। तो आम सिलेबस में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अछि और एवरेज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन न्यूमेरिकल अछि, बट आर एटा थ्योरी अछि। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में काइनेमेटिक्स इक्वेशन पहुंचे जे लाइक जो v square minus c square 2s, v is equal to u plus at, s is equal to ut plus half it square, like that. These are the formula we are getting in case of यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो फर्स्ट बुझबे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कोन। जदि वेलोसिटी टा यूनिफॉर्मली चेंज होछ, वेलोसिटी केमति चेंज होछ, यूनिफॉर्मली चेंज होछ। जेम तुम लास्ट स्लाइड रे कहली, इट वेलोसिटी टा यूनिफॉर्मली चेंज होला, इक्वली चेंज होछ, इक्वली चेंज होछ। बट से टाइप रो सॉरी, से टाइप रो वेलोसिटी कोन कहउछ, यूनिफॉर्म। जदि वेलोसिटी यूनिफॉर्मली चेंज होनी, फास्ट अछि 1, तापर 3 हे गेला, तापर 9 हे गेला, तापर 50 हे गेला, विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम इंटरवल सेम अछि, किंतु चेंज इन वेलोसिटी इंटरवल टा कांस्टेंट, ताको हम कहउछ वेरिएबल एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन कोन, एवरेज एक्सेलरेशन होची द स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी, स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी बाय स्मॉल चेंज इन टाइम, एटा होची एवरेज वेलोसिटी। अदरवाइज हम कहि परबा v2 minus v1 by del t और t2 minus t1 भी कहि परबा, किछ असुविधा नै, t2 minus t1। एटा होची एवरेज एक्सेलरेशन। मन रखो सब बेले न्यूमेरिकल पड़े एवरेज एक्सेलरेशन ऊपर। तापर हम देखिबा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कोन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होची ए जो del v by del t हम लिखुछे, इफ del t tends to 0 then it will be dv upon dt। एटा होची इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। माने गोटे इंस्टेंट रे कोन एक्सेलरेशन अछि, गोटे इंस्टेंट रे कोन एक्सेलरेशन अछि। मोटे एग्जांपल दोस देखो, गोटे ग्राफ हम प्लॉट करिवा। एटा v, एटा t, और एटा होची v, एटा होची सॉरी, एटा होची t, एटा होची v। तो ग्राफ गोटे एम्ति पैराबोलिक अछि, गोटे स्ट्रेट लाइन अछि। कहला डिफरेंस कोन, एटी स्लोप इज कांस्टेंट। तुम जेमति भी नियो, एंगल इज कांस्टेंट, स्लोप इज कांस्टेंट। जदि स्लोप कांस्टेंट हबो, देन जो v आउ t भीतर रेशियो भी कांस्टेंट रहउछ। देन एई केस रे अपन कोन कहबा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। कोन कहबा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। माने एक्सेलरेशन टा कोन होची, कांस्टेंट, जेतु स्लोप टा कांस्टेंट। तो मन रखो स्लोप ऑफ vt graph gives acceleration।
ओके किंतु एई केस रे देखो टेंजेंट नबा जो भी स्लोप जते फाइंड आउट करबा टेंजेंट नबा टेंजेंट नेले देखो एंगल सब धीरे धीरे बढ़ी बढ़ी जाउछ ना कमी कमी जाउछ बढ़ी बढ़ी जाउछ त माने स्लोप एठी कोन होउची बढ़ुची एठी θ1 θ2 θ3 तो स्लोप जदी एंगल बढ़ुची स्लोप बढ़ले एक्सीलरेशन कोन हो बढ़ियो तेन करी एटा होची VT ग्राफ नॉट ST ग्राफ एटा होची VT ग्राफ ST ग्राफ हेकले कंफ्यूज हे जिवो ST ग्राफ माने ठीक अछि एटा VT ग्राफ मु कहूची तो तेन करी कोन बुझ स्लोप ऑफ VT ग्राफ विल एक्सीलरेशन अंडरस्टूड क्लियर ओके तो एबे हमें एवरेज एक्सीलरेशन को बेस करी किछटा क्वेश्चन करिवा देखो v देछि 2t स्क्वायर माइनस 3t we have to find out the average acceleration between 0 to 2 second and instantaneous acceleration r देछि माने instantaneous acceleration ओके एक्सीलरेशन केते मते को dv upon dt instantaneous acceleration को ता कुछ फर्स्ट एटा कुछ ताको दी डिफरेंशिएट करिया केते आसीबो को एटा 40 आसीबो s और नो माइनस केते आसीबो 3 तो हम कहबे at time t is equal to 2 acceleration केते ला 4 into 2 8 8 minus 3 केते 5 so 5 meter per second square understood average acceleration between 0 to 2 second देछि तो हम दी फर्स्ट कोन करिवा लेट at v टा केते हमर देछि एठी 2t square minus केते 3t so हम कहबे at 0 let it be v1 केते 0 minus of 0 answer will be 0 let me कहबे at 2 second then it let v2 नहीं जीवा तो केते हो 2 पुट करले 2 into 2 square minus 3 into 2 मु डिटेल लिखुची त माने 2 into 4 into 2 8 minus केते 6 आंसर इज 2 meter per what second त माने आमी जदी मु कहबे एवरेज एक्सीलरेशन फार्मूला कोन कहथिली v2 minus v1 by t2 minus t1 बुझ परछो v2 minus v1 by t2 minus t1 so v2 minus v1 केते so v2 हमर केते छला 2 v1 केते छै 0 by what is the time interval 2 minus 0 तो आंसर इज 1 meter per second square हमने एटी एवरेज एक्सीलरेशन केते आसीबो 1 meter per second square नेक्स्ट क्वेश्चन की जीवा एटा देछि डिस्प्लेसमेंट रे इक्वेशन देछि t2 tq minus 60 square find the acceleration and displacement when the body is at rest okay फर्स्ट मत हम इक्वेशन रा लिख दबा s = tq minus of 60 square बॉडी टा रेस्ट केते बेल छै जेतेले वेलोसिटी 0 हुई त माने v = ds by dt हम जान छै रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट त माने रह जेबो 3t square minus 60 तो as per our question body is at rest मतलब the value of v will be 0 right yes or no 3t if I take common then it will be what t minus 2 will be 0 3t square 60 understood clear okay so 3t will be 0 t will be 0 which is not possible then t minus 2 equal to 0 so t equal to 2 second it is possible so at time t okay at time t then the acceleration will find out so acceleration is what dv by dt acceleration is dv by dt dv कितना था 3t square minus हमने d by dt of 3t square minus 60 yes or no then that is coming 60 minus 6 yes or no then at time t what is the acceleration 6 into 2 minus 6 which is 12 minus 6 answer is 6 then acceleration is 6 meter per second square ओके तापरे कोन पचरची डिस्प्लेसमेंट पचरची से टाइम में डिस्प्लेसमेंट ऑलरेडी दे छी s इक्वल टू केते tq minus 60 स्क्वायर बट टाइम केते हमर भातला 2 भातला एंड 2q minus 6 into केते 2 स्क्वायर 2q टा केते 8 minus 6 into 4 is 24 2q is 8 yes 2q is 8 and 6 into 2 square 6 into 4 is 24 तो एटा केते हबो माइनस ऑफ 16 एटा निजे कैलकुलेट करिवो मे बी कोठी मिस्टेक थिवो कैलकुलेशन बट प्रोसेस मु बतै देली म आउथली प्रोसेस हम कहि दोछि से कहि छी गोटे इक्वेशन दे छी डिस्प्लेसमेंट रो पचरसी व्हाट इज द एक्सीलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट बॉडी टा केतेले रेस्ट रे थिवो जेतो तर वेलोसिटी 0 थिवो सेटा तो तेनु फर्स्ट कोन हम इक्वेशन लिख देबा डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी कैलकुलेट करबा वेलोसिटी के 0 नबा देन हम दुटा टाइम मिलेबो टाइम 0 मिलेबो टाइम 2 मिलेबो 0 तो नबानी हम 2 टा नबा then acceleration पाई
कहा को डिफरेंशिएट करिया वेलोसिटी की डिफरेंशिएट करिया एक्सेलरेशन मिलेला देन टी रो वैल्यू टा एठी पुट कर दबा एक्सेलरेशन केता 6 मीटर पर 6 सेकंड स्क्वायर तापरे पछे डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट रे इक्वेशन जानचे इक्वेशन एठी लिखि दबा टी रो वैल्यू पुट करबा आंसर फाइंड आउट करबा ओके कैलकुलेशन टिके क्रॉस चेक कर दो ओके आउट क्वेश्चन s is equal to 3t i cap plus 40 j cap जेतले एई फॉर्मेट रे देखिबो i cap j cap फॉर्मेट रे तबे मन रखिबो गोटे केमति करिवो वेलोसिटी जदि हम पचरिबी तमे एठी sx देछि केते ए s जो देछि 3t i cap plus 40 j cap sx केते कहलो 3t sy केते कहलो 40 एमति मन रखिबो sx केते 3t sy केते 40 जदि vx तमे कैलकुलेट करिवो तो dx by dsx by केते dt अरे एस और नो एपट जदि vy कैलकुलेट करबो dsy by केते dt जदि यार डिफरेंशिएशन हबो 3t रो केते 3 r केते आसीबो 4 तमने वेलोसिटी वेक्टर को एमटी हम लिख परिबो 3i क्या प्लस 4j क्या पहला भूल कर दियंती स्पीड हम एठी कैलकुलेट कर दे परिबो स्पीड इज वेलोसिटी मैग्नीट्यूड व्हिच इज 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अंडर रूट दैट इज 5 मीटर पर सेकंड अंडरस्टूड एमटी करिवो s टा को ना डिवाइड कर दो दीटा पार्ट sx एंड sy काई ना ij फॉर्म न देछि तापरे कोन पचारछि कहछि वेलोसिटी एट t इक्वल टू सेकंड वेलोसिटी एट 2 इक्वल 3t इक्वल टू केते सेकंड देछि 2 सेकंड वेलोसिटी रो एक्सप्रेशन हमर कोन थिला 3i प्लस केते 4j तमने एठी आ t अछि की t जदि नै आंसर केते 0 अंडरस्टूड तापर पचारछि एक्सीलरेशन केते जदि वेलोसिटी 0 तमने एक्सीलरेशन कोन अछि 0 there is no question about acceleration speed is 3 no sorry speed is kete 5 but not velocity 5 it velocity kete 0 jodi velocity kete asbo 0 there is no question about acceleration is also 0 ta बढ़िया question ta बुझला जानि परछ कोन जदी ij फॉर्मेट रे देथिबो तन तुमको sx xy फाइंड आउट करे पड़िबो देन vx vy देखिबो vx vy को जदी ij फॉर्म रे लिखिबा 3i cap plus 4j cap तार मैग्नीट्यूड ता होचे स्पीड अंडरस्टूड ओके नेक्स्ट क्वेश्चन एटा भी सेम देजे t स्क्वायर i cap प्लस 3t एठी को sx केते t स्क्वायर i cap तबे vx केते वेलोसिटी केते आसीबो 2t एठी t आसी होला देखो बुझेला सिमिलरली sy एठी के दिहाइछि 3t - 1 तबे vx केते आसीबो को डिफरेंशिएट करले 3 आसीबो अंडरस्टूड क्लियर देन आमे एठी एक्सीलरेशन भी केते आसीबो x केते आसीबो 2 एठी ay केते आसीबो 0 काइना कांस्टेंट अछि बुझेला तापर से कहिछि आ t = 2 सेकंड केते आसीबो देखो एठी vx अछि केते 2t एठी सॉरी एठी vy एटा vy केते 3 तन vy तो मिलिबोनी तन vx केते अछि 2t t जगह पुट कर दियो 2 तमने 2 * 2 केते 4 हे होला तन vx केते 4 तो आको हम वेक्टोरिकली हम लिखि परिबा 4i cap plus 0j cap अंडरस्टूड बट एक्सीलरेशन केते अछि x एक्सिस रे केते अछि 2 y एक्सिस रे केते अछि 0 सॉरी x केते 2 y ay केते 0 अंडरस्टूड से पचार से फाइंड द वेलोसिटी स्पीड एंड एक्सीलरेशन एट t = 2 सेकंड एठी मते गोटे कथा को वेलोसिटी रो तो मैग्नीट्यूड डिपेंड करला टाइम ऊपर फर्स्ट केस रे बट सेकंड जो केस एक्सीलरेशन डिपेंड करूनी ये कहां पर डिपेंड करने टाइम ऊपर डिपेंड करलानी मन रहला एटा आउथर टिके रिवीजन कर दो एटा ଗୋଟେ इक्वेशन देछि आपको ij फॉर्म रे लिखि देबो sx sy लिखिबो vx vy लिखिबो ax ay लिखि देबो अधा आंसर मिलेला तुमको एठी तापर जेतु vx ता 2t अछि t रो वैल्यू ता पुट कर देले इंस्टेंटेनियस वैल्यू 4 आसी वाला एंड जेतु 4 अछि तो देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट एक्सीलरेशन 0 ना बुझला okay so with this I'm ending this lecture so first of all thank you so much for watching my video if you like my video please do subscribe my channel and share with your friends for further notification so thank you all the best